क्वेश्चन जिसकी बेटा वेटेज 8 मार्क की आपकी फाइनल एग्जाम के अंदर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर को लेकर। तो उसके बेटा अभी तक हमने छोटे छोटे टॉपिक जो भी डिस्कस करे, इसका फुल फ्लैज जो क्वेश्चन बनता है, उस फुल फ्लैज क्वेश्चन के अंदर बेटा जो जो भी आपको इंफॉर्मेशन गिवन होगी, स्टेप बाय स्टेप एक वर्किंग नोट के अंदर बेटा, एक वर्किंग पार्ट के अंदर क्या सीक्वेंस रहेगा, how to calculate beta, first of all we have to find out the new ratio, then beta sacrificing ratio as per question statement, then beta journal entries, in journal entries के अंदर regarding goodwill treatment, journal reserve, undistributed profits and beta workman compensation fund. Means the very first thing is that beta we have to just find out the new ratio. After getting new ratio beta, in the next step sacrificing ratio, then beta journal entries after sacrificing ratio. इन जर्नल एंट्रीज के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा बेटा जी आपका, वो रहेगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। और बेटा वो डिपेंड करेगा कि कौन सा केस, ठीक है जी। गुडविल बेटा कैश ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर, गुडविल ऑलरेडी अपीयर है तो बेटा उसको लेकर, गुडविल रिटेन्ड, विड्रॉ, वट एवर द केसेस, आपने बेटा उनको लेकर एक वर्किंग के अंदर जर्नल एंट्रीज। सो आफ्टर मेकिंग जर्नल एंट्रीज, नेक्स्ट स्टेप बेटा रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। बेटा क्वेश्चन की मेन जो बॉडी पार्ट रहेगा वो यहां तक है, बिकॉज द मेन अकाउंटिंग चेंजेस आर व्हेन द न्यू पार्टनर ज्वाइनिंग एज अ न्यू पार्टनर, द मेन अकाउंटिंग चेंजेस आर द वेरी फर्स्ट चेंज बेटा विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है जी। तो एज पर द क्वेश्चन स्टेटमेंट बेटा वी हैव टू फाइंड आउट द न्यू रेशियो। After that beta sacrificing ratio, which is old ratio minus new ratio, फाइंड आउट किया आपने sacrificing ratio। उन रेशियो के बेसिस के ऊपर बेटा आपने जर्नल एंट्रीज, गुडविल बेटा एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 हमने डिटेल में डिस्कस किया था। देन आफ्टर दैट जर्नल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉसेस बेटा ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। दीज जनरल रिजर्व्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और बेटा वर्कमैन कंपनसेशन फंड आर मेंटेन्ड बाय द ओल्ड पार्टनर एंड बेटा टू बी ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, उन्हीं का राइट रहेगा। देन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज बेटा विद द टाइम पासेज देयर मे बी सम चेंजेस इन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एट द पासेज ऑफ टाइम, तो बेटा उनको लेकर रिवैल्यूएशन एट द टाइम ऑफ एडमिशन टू नो द एग्जैक्ट प्रॉफिट और लॉस। तो बेटा जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर है वो भी हमने डिटेल में पढ़ा कि रिवैल्यूएशन का जो नेचर है बेटा नॉमिनल अकाउंट का नेचर है, और इस अकाउंट का जो रिजल्ट होगा बेटा वो भी प्रॉफिट और लॉस। और इस अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड क्या करना है, बेसिकली आपने चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। और आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑल दीज वैल्यूज बेटा द नेट कंक्लूजन कम आउट एज अ प्रॉफिट और लॉस विच इज ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, ठीक है जी। Then beta after this, next part is which is the most important part is partners capital account. In this account, all the concerned entries, बेटा इसमें कैलकुलेट कुछ नहीं करना आपने, जस्ट पोस्टिंग करेंगे। Say 3 partners are there, then beta we have to make 3 columns as per the question. If 4 partners are there beta, then 4 columns. So in this partners capital account we have to just post all those entries which are related with the partners, ठीक है जी। Only those transaction, those entries are posted beta which are related with the partners and amount in the concerned partners account. So say the partners are A, B or C,
एंड बेटा पोस्टिंग रूल जो बेटा +1 से करते आ रहे हैं, बेसिकली से देयर बैलेंसेस, जो बैलेंस ऑलरेडी आपको बेटा गिवन होंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन फॉर ओल्ड पार्टनर्स which is already given in the balance sheet. Then beta the amount brought in by new partner as a capital. Then for premium for goodwill, for retaining the goodwill, premium for goodwill transfer to beta sacrificing partners. If goodwill is already a peer beta, then goodwill is to be written off between old partner and old ratio. Then beta any general reserves will transfer to old partners. Any undistributed profits also beta transfer to old partner in old ratio. If undistributed losses are there, then again undistributed losses transfer to old partner in old ratio. So all those entries, concerned entry beta, which are related with the partners are posted to partners capital account. These are the main basic beta item which are related with the partners in full-fledged quotient. So after transferring this, if workman compensation fund is there, then beta again transfer to old partner and old ratio. If beta the revaluations result after this postings, if revaluation profit is there, then beta by revaluation profit transfer to old partners in old ratio. If beta revaluation loss is there, then revaluation loss, which is also transferred to old partner in old ratio. Beta it all given in the journal entries and in revaluation account, which will be transferred to partners capital account beta in the concerned partners columns. Their balances, cash brought in by the new partner. Beta if premium goodwill retain in the business, then again transfer this. General reserve given transfer to old partner in old ratio. Means all those entries which are making in the beta working note are transferred to partners capital account. ठीक है जी, जो भी बेटा पार्टनर से रिलेटेड होंगी. देन रिवैल्यूएशन के रिजल्ट बेटा, revaluation of assets or liabilities के result, if profit is there then transfer to old partner in old ratio. If loss is there beta, again transfer to old partner in old ratio. So at last we have to just balance the beta partners capital account. So in this account beta compare both the sides, balancing the account, and the balance comes as a two balance carried on, which is a balancing amount. Beta A's balance, B's balance and C's balance. These are the balancing amount which will be carried forward to the beta new balance sheet, which is to be prepared after the partners capital account. So the beta in full-fledged quotient, the link is these things are the basic things. Then beta prepare revaluation account. After revaluation account beta, next is the partners capital account. In this account only those entries are posted beta which are related with the partners capitals, and beta main items are this. Their balances, opening balances, beta cash brought in by new partner, प्रीमियम बेटा रिटेनिंग के लिए पोस्टिंग करनी है बेटा, वहां से कोई दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है. जनरल रिजर्व, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, वर्कमैन कंपनसेशन फंड. इफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इज देयर देन ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर, पोस्टेड टू क्रेडिट साइड. इफ goodwill is already appears in the books beta, then that is the old goodwill which is to be written off between old partner in old ratio. Then beta undistributed loss and revaluation loss transferred to partners. So after beta preparation of partners capital account, in the next step we have to just maintain the new balance sheet. Beta this balance sheet is prepared after preparation of the partners capital account. So beta as on dated so and so, so amount beta assets and amount
and liabilities. So this is the last step for the full-fledged question. बेटा in this balance sheet, बेस क्या रहेगा बैलेंस शीट के अंदर बेटा? ओल्ड बैलेंस शीट फॉर द न्यू बैलेंस शीट. इन दिस बैलेंस शीट ओनली दोज आइटम्स आर रिकॉर्डेड बेटा विच आर चेंज्ड विद द न्यू वैल्यूज. और जिन वैल्यूज के अंदर कोई चेंजेस नहीं थी बेटा उनको डिस्क्लोज नहीं करना. कौन सी आइटम नहीं लिखोगे बेटा? जो राइट ऑफ कर दी, डिस्ट्रीब्यूट कर दी. ठीक है. और जिन वैल्यूज के अंदर कोई चेंजेस नहीं है बेटा एज इट इज वैल्यूज आ जाएंगी. जो वैल्यू चेंज्ड है बेटा विद रिकॉर्डेड विद द न्यू वैल्यूज. And those items like reserves, undistributed profit, workman compensation fund beta, which is already written off between the old partner are not to be disclosed. ठीक है. And the new values to be recorded beta after all changes. Say जितनी वैल्यू चेंज होगी बेटा उनमें मेन इंपॉर्टेंट कैपिटल्स जो चेंज होंगी कैपिटल्स. फॉर बेटा say as this example ABC new partners their balances. ठीक है. and बेटा the main change in cash और बैंक. ठीक है जी. इसमें क्या रहेगा बेटा? बेसिकली इनका ऑलरेडी बैलेंस विच इज ऑलरेडी गिवन इन द ओल्ड बैलेंस शीट प्लस बेटा कैश ब्रॉट इन amount brought in by the new partner and minus cash withdrew by the old partners. तो बेटा क्या मिलेगा आपको? न्यू कैश बैलेंस. एंड बेटा बाकी इफ जनरल रिजर्व इज देयर and beta general reserve is already written off, undistributed profit is already written off, so beta there is no need to be write on these general reserves and all this thing which is already write off, like goodwill which is already appears in the old balance sheet which is already write off. Beta means those items are not disclosed in the balance sheet which is already written off. ठीक है जी. जितनी भी बैलेंस बेटा आइटम आपने राइट ऑफ करी है बेटा नो नीड टू बी डिस्क्लोज इन द बैलेंस शीट, इन द न्यू बैलेंस शीट. एंड द एसेट्स और लाइबिलिटीज विच आर चेंज्ड बेटा रीवैल्यूड विद द न्यू वैल्यूज वेदर इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू वी हैव टू डिस्क्लोज द न्यू वैल्यूज. ठीक है. सो एंड फॉर कैश स्पेशली वी हैव टू जस्ट सी द बैलेंस ऑलरेडी बैलेंस इन द बुक्स, देन बेटा अमाउंट ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर or any cash withdrawn by the old partner beta net balance to be shown in the outer column and rest assets to be shown beta as per their new values, same like in liabilities. At last both the sides beta will be automatically equal. ठीक है जी. तो बेटा जो फुल फ्लैज क्वेश्चन उसके अंदर बेटा मेन जो पोर्शन था आपका दैट इज अप टू रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड आफ्टर दैट टू स्टेटमेंट्स आर देयर बेटा. वन इज अ टू अकाउंट्स फॉर द देयर, वन इज अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड वन बेटा बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट. ठीक है. जो बैलेंस शीट लास्ट में बनेगी बेटा न्यू बैलेंस शीट उसका बेस क्या रहेगा? ओल्ड बैलेंस शीट. और उस ओल्ड बैलेंस शीट को बेस लेकर बेटा जितनी भी अकाउंटिंग चेंजेस हुई चेंजेस टू बी डिस्क्लोज इन द न्यू बैलेंस शीट. And some items having a nature of like general reserve, undistributed profit beta, old goodwill and workman compensation fund beta, these items are created by the old partners and is to be written off between old partner and in old ratio. So these items are not to be disclosed in the new balance sheet. The major changes beta which took place in the very first thing is the capitals. ठीक है. तो कैपिटल अकाउंट्स के न्यू बैलेंसेस आपको पार्टनर्स कैपिटल से मिल जाएंगे. एंड बेटा कैश बैलेंस बिकॉज एडमिशन हो रहा है पार्टनर का बेटा, तो एडमिशन किस पर्पस के लिए पार्टनर का लेके आ रहे हैं हम? फॉर ब्रॉट इन कैश इन द बिजनेस. ठीक है. दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल एज वेल एज गुडविल. सो वी हैव टू अगेन फाइंड आउट द नेट बैलेंस, कैश बैलेंस आफ्टर ऑल चेंजेस. सो कैसे बेटा? कैश बैलेंस विच इज ऑलरेडी गिवन,
cash brought in by the new partner, cash withdrawn by the old partner, and net balance to be disclosed in the outer side. And rest assets beta, if increase then beta value should be increased, if values are decreased then by decrease. Matlab we have to show new values in the balance sheet, whether assets or liabilities. ठीक है, if there is no change in such assets, some assets, then beta value should be as it is to be disclosed without any change. And the item which are already written off is also not to be disclosed in the balance sheet. ठीक है जी, तो बेटा ये फुल फ्लैज क्वेश्चन आपके पास ये बनता है. मीन्स मेन क्वेश्चन की बॉडी पार्ट क्या रहेगी बेटा, क्वेश्चन केयरफुली आप प्रॉपर रीड आउट करोगे, उसके अंदर एडमिशन की कंडीशंस क्या रहेंगी, उसके बेसिस के ऊपर रेशियोज, देन ट्रीटमेंट बेटा गुडविल एंड ऑल दैट, देन आफ्टर दैट रीवैल्यूएशन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फुल फ्लैज क्वेश्चन. ठीक है, तो इन दिस क्वेश्चन, इन दिस रीवैल्यूएशन अकाउंट बेटा वी हैव टू जस्ट रीड द केयरफुली आइटम्स. After that, find out the changes, whether increase or decrease to be disclosed in the revaluation account, and the result come out as a profit or loss. And that profit and loss is also transferred to old partner in old ratio. So after that, after making revaluation account, in the next step बेटा क्या करेंगे हम यहाँ पर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर सारे की सारी आइटम बेटा पोस्ट करेंगे विच आर रिलेटेड विद द पार्टनर, एंड स्टार्ट विद द बेटा बैलेंस ब्रॉट डाउन, एंड only those items are transferred in this account, posted in this account beta which are related with the partners. ठीक है, तो after transferring, posting all the item beta, in the last step just find out the balance carried on of the partners capital, and this balance is to be beta carry forward to the new balance sheet, replace the old capitals by the new capitals. ठीक है, and beta change the liabilities value if changes are given. If no changes are given, then beta value should be as it is. And the item just like reserves, undistributed profit, goodwill which is already written off beta, then there is no need to be disclosed in the new balance sheet. ठीक है जी, and the beta the result come out as the both the sides should be automatically equal. It means आपका question is correct.